Good morning to all of you. This is Poonam here, your social science teacher. Dear students, I hope you all are fine. So, welcome to your social science class. We are doing the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, let's start this chapter with the impact of French Revolution. French Revolution opened up the possibilities for changing the society. Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. तो नए नए ideas discuss होने लगे. For example, in India, Raja Ram Mohan Rai and Derozio talked of the significance of the French Revolution. तो इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. तो हर पर्सन के अलग अलग आइडियाज थे और उनके आइडियाज के बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट लिबरल्स. सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते थे वो. दे वांटेड ए नेशन which tolerated all religions, सभी रिलीजन की जो रिस्पेक्ट करे. एंड दे अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, कि रूलर्स के पास अनकंट्रोल्ड पावर्स नहीं होनी चाहिए. एंड वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो जो सिटीजन्स थे उनके राइट्स को सेव करना चाहते थे लिबरल. एंड दे आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो इतना सब करने के बाद भी दे वर नॉट डेमोक्रेट्स एंड डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो वो लोग एक पार्लियामेंट भी चाहते थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहते थे, फिर भी वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की थ्योरी पे बिलीव नहीं करते थे. सो दीज वर लिबरल्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रेडिकल्स. Now let's discuss the ideology of radicals. They wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Means country की population के basis के ऊपर वहाँ की government बननी चाहिए. According to radicals. And many supported women's suffrage movements. तो उन्होंने women's suffrage movement को support भी किया. They opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. कि बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं लैंड ऑनर्स को, वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को, वो भी नहीं मिलने चाहिए. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो वो उसके अगेंस्ट तो नहीं थे. दे डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओनली इन अ फ्यू हैंड्स. बट उनके अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कुछ एक लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव्स. दे वर अपोज्ड टू रेडिकल एंड लिबरल्स. And French Revolution opened their minds the need for change. So after French Revolution, they thought that some changes should be there. In 18th century, they opposed to the idea of change and believed past had to be respected. तो उनके accordingly past की respect की जानी चाहिए and change should be done through a slow process. और changes तो होनी चाहिए but that should be in a slow process. Next, we will discuss about industrial society and social change. Industrial revolution led to change in social and economic life. New cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and industrial revolution occurred. Industries में revolution आने के बाद social और economic life में changes आई, new cities setup हुई, railway के expand होने के कारण industrial revolution हुई. Industrialization brought men, women and children to factories. तो कुछ इश्यूज थे जो लोगों ने फेस किए, इसके साथ उन्हें फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा. लॉन्ग वर्क आवर्स एंड पुअर वेजेस. वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और वेजेस लेस थे. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स. तो अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड होने लगी और हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स को लोगों को फेस करना पड़ा. What was the role of liberals and radicals during industrialization? Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers, made their wealth through trade or industrial ventures. They felt that such efforts should be encouraged. तो मेनली जो प्रॉपर्टीज थी वो लिबरल्स की थी या फिर रेडिकल्स की थी. तो उनके अकॉर्डिंगली इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी एम्प्लॉयर्स की उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड. And they opposed privileges the old aristocracy had by birth, and they firmly believed value of individual effort, labor and enterprises. तो इनके वेलफेयर के लिए रेडिकल्स ने और लिबरल्स ने काम किया. By the mid-19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention. उसके बाद 19th century में यूरोप में राइज हुआ सोशलिज्म का.
Now, what do you mean by socialism? What does this term mean? It is a system or condition of society in which means of production are owned and controlled by the state. तो सोशलिज्म के अकॉर्डिंगली एक ऐसा सिस्टम है या फिर ऐसी कंडीशन है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है. एंड हु वर सोशलिस्ट? People those who were against private property, they were known as socialist. And solution towards the problem of private property, they believed in the ideas of cooperative. उनके accordingly cooperative societies होनी चाहिए. So what are these cooperatives? Cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. तो workers जो काम करते थे उसके accordingly जो profit है उसको divide किया जाना चाहिए. Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, 1771 to 1858. He was a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiatives. They demanded that governments encourage cooperatives. तो government को भी कॉपरेटिव्स को इनकरेज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रांस लुइस ब्लैंक. सो इन फ्रांस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divide the profit according to the work done by members. सो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. So students, it's all about today's lecture. Next we will discuss in our next video. Thank you. Have a nice day.